Okay, dear students, here we will discuss the comparison between the three different states of matter, which are solid, liquid, and gas. And this table, which is given here, clearly explains the differences. So first of all, the property or the characteristic which we are going to study is arrangement of particles, that how particles are arranged, arrangement of particles. So first of all, as you can see the diagrams here, this is solid, this is liquid, and this is gas, and the particles are shown. So look at here, the particles of the solid, they are closely packed, whereas the particles of the liquid, they are also closely packed, but they are less closely packed than a solid. Okay, now look at here the gas. The particles, they are not closely packed, they are very far apart from each other. So the arrangement of particles says that in solids, the particles, they are closely packed, they are showing compact arrangement, and they are also showing orderly arrangement. एक order में है ना, एक तरतीब में है. So that is why we are saying that this is orderly arrangement. So the particles of the solid, they are closely packed, they are showing compact arrangement, and they are also showing order arrangement. They are orderly arranged. Now look at here the liquid. The particles, they are less packed, less closely packed than in solid, but they are also showing disorderly arrangement. Here the particles, the solid particles, they are showing orderly arrangement, but the particles of the liquid, they are showing disorderly arrangement. Here gas, the particles, they are very far apart from each other, and they are also showing disorderly arrangement. There is no order arrangement, they are actually showing random arrangement, you can say. Now the attractive forces between the particles, as we know that solid, liquids, and gases, they have got attractive forces between their particles. So the particles of the solid, they have very strong forces of attraction between them. ठीक है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग attraction है. The strong forces of attraction exist between the solid particles, whereas in liquid, the forces of attraction between liquid particles, they are strong, but they are less strong than solid. But in gas, the forces of attraction, they are very weak. Okay, look at here the kinetic energy of particles. The kinetic energy of solid particles, they are very low. Okay, they are very low. The kinetic energy of the liquid particles is also low, but it's not very low. It's low, but not very low, just like as solid. If you look at here at the liquid, the kinetic energy of the particles is high. Okay, now motion of the particles. As the kinetic energy of the particles in solids is very low, that is why they vibrate and rotate about the fixed positions. They vibrate and rotate about the fixed positions. So they only show vibratory motion and rotatory motion, and they have got fixed positions. इनकी fixed positions है ना, ऐसा तो नहीं होता कि ये particle उठकर यहाँ आ जाए या ये particle उठकर यहाँ आ जाए, because they have got fixed positions. Now the motion of the particles in the liquid is freely. So the liquid particles, they move freely throughout the liquid. For gases, they move about rapidly in any direction. So they are showing random motion, they are showing rapid motion, they are showing random motion over here. So this is actually the explanation for the differences in the characteristics of solid, liquid and gas, which is based on the kinetic particle theory. Okay, so if you look at here, students, so here the solid state, why does a solid have a fixed shape? Solid की fixed shape क्यों होती है? So these are the four important points. So according to the kinetic particle theory, the particles of a solid, because they are closely packed in an orderly arrangement, they are held together by very strong forces of attraction, they have kinetic energy to vibrate only, and they cannot move about freely. So these important points show that solid have a fixed shape, but solid
हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एज वेल। फिक्स वॉल्यूम क्यों है? वॉल्यूम का ताल्लुक है कंप्रेसिबिलिटी से। डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू कंप्रेसिबिलिटी। अगर आप कंप्रेस कर सकते हैं किसी स्टेट ऑफ मैटर को, इट मीन्स दैट इट डजेंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। अब सॉलिड्स दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड्स में इतनी कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है तो आप तो उसको तो कंप्रेस ही नहीं कर सकते। आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें, उसको स्क्वीज़ करें, सॉलिड अपनी शेप तो चेंज नहीं करेगा। और अपना वॉल्यूम भी उसका फिक्स रहेगा। दैट इज़ वाई सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। नाउ लुक एट द here at the liquid state. Why does a liquid not have a fixed shape? ठीक है, liquid की fixed shape क्यों नहीं होती? Okay, now because they are showing disorderly arrangement, they have weaker forces of attraction, they have more kinetic energy as compared to the kinetic energy of the solid particles, and they can move freely throughout the liquid. That is why liquids, they don't have fixed shape. Now let's get to the volume. Why does a liquid have a fixed volume? Liquid have a fixed volume. The particles of the liquid are further away from one another than the particles of a solid. So they have fixed volume. The liquid particles, they are still closely packed. ठीक है, liquid particles अभी भी closely pack हैं, इसलिए liquid को compress नहीं किया जा सकता। ठीक है, कंप्रेस सिर्फ गैसेस को किया जा सकता है। डू रिमेंबर, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दे डोंट कंप्रेस्ड, दे कैंट बी कंप्रेस्ड। ठीक है, आपने याद रखना है। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान स्पेसेस ही नहीं होती, उनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। नाउ लेट्स गेट टू द गैसेस। ओके, अगर आप गैसेस को देखें हियर, सो व्हाई डज अ गैसेस नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप? गैसेस की फिक्स शेप क्यों नहीं होती? Because their particles are further apart from each other, weaker forces of attraction है इसमें, kinetic energy ज़्यादा है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, तो फिर उसकी फिक्स शेप कैसे हो सकती है? वो तो अपनी शेप चेंज करता रहता है। Now gases, they don't have a fixed volume. फिक्स वॉल्यूम इसलिए नहीं हो सकता, यहाँ पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन किया है दैट द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो अब आप क्या गैस रेंज में, ये देखें आपको पार्टिकल्स नज़र आ रहे होंगे गैस के। जब हमने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, बाय अप्लाइंग प्रेशर, जो प्रेशर अप्लाई किया, द पार्टिकल्स दे कम क्लोज टू ईच अदर। अब देखें पहले वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ था, नाउ आफ्टर दिस बाय अप्लाइंग प्रेशर तो वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो गया है। सो इट शोज़ दैट गैसेस डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका होम टास्क क्या है? सो योर होम टास्क इज़ दैट यू विल राइट द क्वेश्चंस व्हाई डज अ सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप। आंसर भी और क्वेश्चन भी क्लियरली आपकी बुक में गिवन है। व्हाई डज अ सॉलिड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम? व्हाई डज अ लिक्विड नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप? व्हाई डज अ लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम? सो दीज क्वेश्चंस ये आपने अपने नोटबुक्स के ऊपर, नीट नोटबुक्स के ऊपर नोट करने हैं, और मुझे इस असाइनमेंट में आपने जहाँ आपने अपलोड करना है अपना होमवर्क, मुझे अपलोड करके दिखाना है। ओके, थैंक यू सो मच।